Good morning, student. So today's topic will be grammar part, and this questions comes in your board exam as well as, and it is very well known topic called biodata. So what is a biodata? The application for a job is sometimes accompanied by a biodata of the applicant. The biodata is also called a resume or CV, curriculum vitae. So I will show you, this is CV and this is resume and this is biodata. So all these three things are the same. They might ask you to write a application job. What is application job? नौकरी के लिए अप्लाई करना, that is called as application job. It contains the following information about the candidate. Candidate means जो जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है उसको कैंडिडेट बोलते हैं. So what all the things are there in the job application? Age, health, sex, etc. Education, personal qualification, experience, stability for the job are included. So education means here age, health, sex is shown, then education, qualification is shown, experience and stability for the job is shown. Biodata, then first your name should be there, name, you can write your name, date of birth, marital status, if you are married then write married, if you are not married then write unmarried. If you are a woman then you should write your husband name, okay? Then address, contact number, residence address, residence means कहाँ रहते हो वहाँ का. देन मदर टंग, कौन सा लैंग्वेज है खुद का वो. फिर और कौन सी लैंग्वेज आती है. लैंग्वेज नोन मीन्स विच ऑल लैंग्वेज डू यू नो. Here it is shown English, Tamil, Hindi, Malayalam to speak. Then passport number. This is external. If you want to write, if you have it then you can write it. If you don't then no problem. This is educational background in reverse chronological order. This is not required. This is professional experience. If you have any other type of experience you can mention it below. Then hobbies. Hobbies means आपकी क्या क्या आदतें हैं, what all you like. Hobbies means photography, gardening, reading, traveling, you can write whatever you wish. Expected salary मतलब कितना सैलरी, कितना इच्छा रखते हो कि कितनी सैलरी होनी चाहिए. 35,000 per month, then okay. Then salary drawn. Salary drawn मतलब लास्ट में लास्ट कितना, 32 तक. यूँ. रेफरेंस यानी कि किसके थ्रू से तुम नौकरी के हिसाब से आए हो, किससे इस नौकरी के बारे में पता चला. मिस्टर रवि के थ्रू से, और तो मिस्टर रवि का कॉन्टैक्ट नंबर, नाम वाम सब कुछ. डिक्लेरेशन में आपको क्या लिखना है. डिक्लेरेशन मीन्स आप क्या सामने वाले को एक मैसेज देना चाहते हो, क्योंकि आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो. तो आपको क्या लिखना है. आई हियर बाय डिक्लेयर दैट द अबाउ गिवन इन्फॉर्मेशन इज़ ट्रू टू माई नॉलेज. और आप होशो आवाज़ में बोल रहे हो कि ये ऊपर की जो जितनी भी सारी चीज़ें दी है ये सब मेरी है जहाँ तक मैंने मेंशन किया है. Then you have to write your
स्टेशन, डेट, फिर सिग्नेचर. सो दैट्स ऑल. ये था आपका बायोडेटा का इन्फॉर्मेशन. यू कैन गिव योर इन्फॉर्मेशन एंड यू कैन स्कोर अ गुड मार्क्स इन योर बोर्ड एग्ज़ाम. थैंक यू so much.